Namaskar, dear participants. Good evening to everyone. My name is Deepthi, and I'm a naturalist and a camp leader based at the Kishanpur range of Dudhwa Tiger Reserve. So, I welcome you all today to our program, The Art of Jungle Survival. And we are just about to begin that. Today, I would like to take this opportunity to tell you something about my work and Dudhwa Tiger Reserve, the place where I work. So let's begin. See, as I told you that I am a naturalist and my life is very different from that in a city. See, in city it is so monotonous. Life is so monotonous. While my life as a naturalist is full of fun, adventure, and discovery every day. There is no monotonous things in my life. See, daily I experience fun, adventure, and discovery. So let me tell you something more about the place where I work, that is Dudhwa Tiger Reserve. See, it's a forest, it's a dense forest which is spread over India and Nepal. Here you can see a route map of Dudhwa Tiger Reserve. See, if you're coming from Delhi, you have to come to Muradabad, Bareilly, and then from Shahjahanpur by road, you can come to Dudhwa Tiger Reserve. And if you are coming to Lucknow, from Lucknow is also the nearest airport for Dudhwa Tiger Reserve. From Lucknow, it is just 200 kilometers and a nice road to drive to Dudhwa Tiger Reserve. See, Dudhwa is in the Lakhimpur Kheri and Bahraich districts of Uttar Pradesh. So it's a dense forest where even sunlight don't penetrate at times. There are places where even sunlight don't reach the forest floor. And actually, you can go for a jeep safari in vast grasslands, which are like, African savannas. So there are huge, vast grasslands where you can go for a jeep safari in Dudhwa Tiger Reserve. And you can sit on the machans, that is watchtowers on the side of the lakes, and see the birds, the migratory birds and other wildlife which abound in these wetlands. We can also go for a boat cruise. In Gedua River, we can go for a boat cruise and observe the wildlife, which is, rare. So here, rare is common at Gedua, the gharials, the Gangetic dolphins. Even, through the core forest of Dudhwa, you can go for a train safari. These are the Vistadome coaches. And we go for a train safari through the core forest of Dudhwa in this train. Now we also go into the forest walking like a naturalist on tiger's own territory. So you can actually track the wildlife while going for a walk in the forest. Now, in our tents at Dudhwa Tiger Reserve, as a real naturalist, you can experience the elements of nature, like dewdrops, like rain, the winds,
Like a real naturalist, you can live in a tent and experience the nature. And we go for walks on tiger's tracks where tiger himself walks. So it's full of excitement walking on the same track, but we have to be very vigilant. And the river Mohana, it forms the geographical boundary. So you can even just wade through water and enter into Nepal. At what place can you do that? That you can go to a different country without any passport or visa. Just wade through water and reach Nepal. And there is the Tharu tribal community which lives in Dudhwa Tiger Reserve. So you can interact with them, discover their forest wisdom, their culture, their heritage. And of course, you can photograph these memories, these precious memories, which can be for you for lifetime. So do your photography, document them, and keep these memories for life. We do our bonding with not only Mother Nature, but also with our family at the camp. So campfire is the time when we do different activities, do our bonding with our own family members and friends. Now, participants, today with me, we have Anirudh Gupta. He is the camp mentor at National Environment Science Camp, and he's also a wildlife photographer. So today he is going on this mission in the forest of Dudhwa Tiger Reserve. So in this mission, he will be staying in the forest on his own during night. And his mission is to photograph some interesting wildlife and birds. So he is going for this mission. At camp, Anirudh helps the campers to explore nature as a naturalist. He organizes activities for them and actually build their bond with the nature. So today he is going on his own, all on his own in the forest of Dudhwa Tiger Reserve on this mission to get some interesting photographs for himself of wildlife. So let's join Anirudh on his mission. We will be joining him today on the road to Dudhwa Tiger Reserve. So we'll just join him. Give me a minute. I hope everyone is really excited to join Anirudh today on this mission. So he's already there on a foggy. गुड मॉर्निंग, कैसे हो? गुड मॉर्निंग, कैसे हो भाई? बस बढ़िया, चले सर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, गाड़ी रेडी है एकदम। तो चले? हाँ बिल्कुल बिल्कुल एकदम रेडी। बैठते हैं, पीछे रख देता हूँ। हाँ सारा सामान पीछे रख दो। ठंड बहुत है दुधवा की तरफ। हाँ बहुत ठंड है यहाँ पर। मतलब अभी तो पूरी रात मुझे यहीं गुजारनी है। हाँ अब सोचो कैसे गुजारोगे। सर पहुंच गए? हाँ पहुंच गए आप? बस अब तो आपका सफर जो है मैं यहीं आपको छोड़ रहा हूँ। सर अब
बस और आप देख लीजिए अपने चारों तरफ सकुशल पहुंच जाए। चलिए सर, थैंक यू सो मच अरे यहाँ पे छोड़ने के लिए। इट्स प्लेजर। आप मैं मिलता आराम हूँ से आपसे। जाइएगा। बिल्कुल सर। मैं बैग ले लूँ। हाँ, जंगल का ख्याल रखिएगा बस। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अपना भी ख्याल रखना पड़ेगा मुझे। बिल्कुल बिल्कुल। अब जितना भी करिए, ऑल अलोन। हाँ पूरी रात अभी मुझे सरवाइव करनी है, पूरा दिन अभी मुझे अपना पूरा शेल्टर वगैरह बनाना है। चलिए सर, चलते हैं। चलिए, आप मिलिएगा फिर। हाँ फिर बिल्कुल, मैं मिलता हूँ डेफिनेटली आपसे। डेफिनेटली। चलिए। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि एक हम, क्योंकि अब हम फॉरेस्ट के बीचों बीच आ चुके हैं, एकदम सेंटर पे। बहुत सेंटर में भी नहीं, हम बिल्कुल कोर फॉरेस्ट में भी नहीं, हम थोड़ा सा आउटर एरिया में हैं। बट अभी मतलब हमें क्या करना है कि हमारा मेन ऑब्जेक्टिव जो है, पहले हम उसको कंप्लीट करना हमको पड़ेगा। और हमारा मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि हम सबसे पहले एक ऐसा एरिया चूज़ करें जहाँ वाइल्ड लाइफ की मूवमेंट थोड़ी कम हो। उन सबसे पहले एक सबसे मेजर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो हमें ध्यान में रखना होगा वो ये है कि मेरी सेफ्टी। तो अब क्योंकि मैं जंगल में हूँ और मेरी सेफ्टी अब सिर्फ मेरे हाथों में, और मैं एकदम अकेला हूँ यहाँ, तो उसके लिए मेरे को सबसे पहले एक सेल्फ डिफेंस वेपन अपने लिए बनाना होगा। और सेल्फ डिफेंस वेपन्स का मतलब ये नहीं होता कि हम किसी जानवर को हम यहाँ मारने आए या उसको हम शिकार करने आए, ऐसा नहीं है। तो पहले एक हम शेल्टर का एरिया हम ढूंढ लेते, उसके बाद हम पहले अपना सेल्फ डिफेंस वेपन बनाते। तो मैं काफ़ी देर से मैं आसपास ढूंढ रहा था, तो मुझे ये 2 पेड़ एक आसपास दिखे हैं। मैं इनमें बना सकता हूँ। मैं अपना सेल्फ डिफेंस वेपन भी यहीं ढूंढ लेता हूँ और इन दोनों पेड़ों में मैं अपना शेल्टर बना लेता हूँ, है ना। तो सबसे पहले तो मैं अपना सामान यहाँ रखता हूँ, और ये मेरा रैकसैक है। और थोड़ा सा इनको मैं पैर से ही इन पत्तों को, सूखे पत्तों को थोड़ा साइड कर लेता हूँ। मुझे ये भी देखना होगा क्योंकि ये जंगल का एरिया है, तो छोटे बहुत कीड़े, इवन स्नेक्स भी यहाँ हो सकते हैं। तो एक चैलेंज है यहाँ पे अपना शेल्टर बनाना। तो मैं अपना मैट सबसे पहले बिछा लेता हूँ, क्योंकि इसमें मैं अपना सामान रख सकता हूँ। नहीं तो यूजुअली अगर मैं फॉरेस्ट फ्लोर में अपना सामान रखूँगा तो प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो अब मैं देखता हूँ मैं क्या क्या लेके आया हूँ। तो सबसे पहले हम देखते हैं मैं बैग में क्या क्या है। तो ये मेरा स्लीपिंग बैग भी आ गया है, निकाल दिया मैंने। तो इसको मैं एक साइड में भी रख देता हूँ क्योंकि इसकी ज़रूरत मुझे शाम के बाद पड़ेगी। अभी ये मेरा कैमरा है, मेरा DSLR, और ये मेरी प्लास्टिक शीट है जिसको हम एज अपना शेल्टर हम बना सकते हैं इसके थ्रू। कुछ रोप्स भी मैं लाया अपने साथ इसको बांधने वगैरह के लिए। और मेरे पास एक पैन है, उसमें मैं अपना खाना बना सकता हूँ। और ये कुछ रोप्स और हैं। नेसेसरी है आपकी पानी की बोतल, और आपको अपने साथ एक मैच स्टिक कैरी करना होगा। ये मैंने कुछ दोने और कुछ लकड़ी की चम्मच भी मैं साथ ले आया हूँ कुछ खाने वगैरह के लिए। बाकी मेरे पास 2 इम्पोर्टेंट औजार है, उसमें से एक है आपका स्पड, इसे हम खुरपी भी बोलते हैं, और एक ये सिंपल नाइफ है। सबसे पहले अब हम अपना एक सेल्फ डिफेंस वेपन हम बनाते हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं भाला बनाऊँ, और भाला बनाने के लिए हमें एक सीधी लकड़ी चाहिए होगी, और एक स्ट्रॉन्ग सीधी लकड़ी। तो उसको हम सामने से शार्प करके हम उसको एक पॉइंटेड एज दे सकते हैं, तो वो मेरे काम आएगी। तो सबसे पहले मैं एक सेल्फ डिफेंस वेपन अपने लिए बनाता हूँ, उसके लिए मुझे लकड़ी ढूंढनी होगी। तो लकड़ी के लिए तो ये मुझे एक लकड़ी यहाँ पड़ी दिख रही है। तो मुझे आसपास तो कोई अभी दिख नहीं रहा है, कोई वाइल्ड लाइफ की मूवमेंट भी नहीं है। बट ये है कि मुझे डर अभी भी लग रहा है। मैं जितना एक्साइटेड हूँ अपनी रात यहाँ गुजारने के लिए, इस जगह को एक्सप्लोर करने के लिए, उतना ही मैं अंदर से भयभीत भी हूँ। अंदर एक डर का भाव भी आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि आप तभी रिस्पॉन्सिबल होते हैं और आप अपनी गलतियों से अब सीखते हैं। तो इसको हम फिर पॉइंट करते हैं अपने लिए। ये हमारा, क्योंकि हमारे यूज़ आएगा नहीं,
तो इसको हम पहले तो इसके जो एजेस हैं उनको हम घिस के हटा देते हैं। तो मैं इसको अपनी नाइफ़ की मदद से ही करूँगा। ये कोई इजी टास्क नहीं है, पर इसमें आपको थोड़ा सा तो ये एक हमें पॉइंटी एज मिल गया है। हाँ, इसको मैं स्पेयर की तरह ऐसे यूज़ कर सकता हूँ भोंकने के लिए किसी को, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि बड़े जानवर आपके मूवमेंट से ना भागते हैं और आप छोटे जानवर भी मतलब आपकी तरफ आएंगे नहीं, पर खासकर अगर आप पर्टिकुलरली जैसे लोग बात करते हैं कि जंगल में टाइगर और लेपर्ड है, तो मेरा ये मानना है, और मानना क्या ये फैक्ट भी है कि जो टाइगर और लेपर्ड्स होते हैं ये बहुत शाई नेचर के होते हैं, तो ये आपकी तरफ आते नहीं हैं, और अगर आते भी हैं तो वो आपके मूवमेंट के दौरान ही वो अपना रास्ता बदल लेते हैं। तो सेल्फ डिफेंस वेपन मेरा बन गया है, तो मैं इसी का इस्तेमाल करूँगा और अपना शेल्टर बनाने की कोशिश करता हूँ। शेल्टर के लिए जैसे मैंने आपको बताया, मुझे 2 लकड़ियाँ 2 पेड़ मिल चुका है। अब इनके बीच में मैं एक डोरी बांधूँगा और अपना शेल्टर बनाऊँगा। और डोरी मैं लाया हूँ मेरे साथ, ये रस्सी मैं उठा लेता हूँ। इसको सबसे पहले मैं एक अच्छी नॉट टाई करता हूँ। नॉट टाई करता हूँ। तो इसमें अगर आप देखते हो तो थोड़ी सी देखिए कैसे मिट्टी इसमें लगी हुई है, मिट्टी और काफ़ी कीड़े भी है इस पेड़ में। तो ये कीड़े बस मुझे को परेशान ना करे रात में, बाकी सब तो ठीक है। तो एक और चीज़ ये है कि क्योंकि मेरा ऑब्जेक्टिव है पूरी रात इस जंगल में गुजारना, तो मेरे लिए जो शेल्टर का ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि ये मेरे को रात के ठंड से भी बचाए, और जैसे यहाँ पे इतनी ठंड पड़ती है तो वो आपका जो ओस यहाँ गिरती है उस ओस से मुझे बचाए, बारिश से बचाए, और जो तेज़ धूप जैसे सुबह होती है दोपहर में या ऐसे, तो उससे भी मुझे बचाए। तो मैं ये प्लास्टिक शीट लगाता हूँ और ग्रीन साइड को मैं अपने इस तरफ लगाऊंगा। ये मेरा शेल्टर है, इसको इसके ऊपर लगाऊंगा। पहले मैं पूरी तरफ बिछा दूँ और इसको, क्योंकि ये एक अच्छा स्लोप मुझे चाहिए। अब इसका स्लोप भी मेरे को इसलिए बनाना होगा ताकि जो बारिश का पानी गिरे तो वो साइड से निकल जाए। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, अब एक कॉर्नर में लूँगा और इस कॉर्नर में एक अच्छा नॉट टाई कर दूँगा अपने रोप से। तो ये मैंने एक अच्छा नॉट इधर बांध दिया है, आई होप ये नहीं खुलेगा। और इसी तरह से मैं बाकी कॉर्नर्स पे भी बाकी 3 कॉर्नर्स पे भी मैं इसको बांधूँगा। मैं इसको यहाँ पे भी कस के बांध देता हूँ इन दोनों में। और मेरे को कोई मूवमेंट आ रही है, मुझे लग रहा है उधर कोई है शायद। बंदर था, एक रिसर्च मैकैक बंदर। ये बंदर बहुत शैतान होता है। मैं तो बिल्कुल डर गया एकदम। चलिए, भूख भी अब काफ़ी ज़्यादा मुझे लग रही है, तो मैं कुछ खाने के लिए बनाता हूँ। और उससे पहले तो मेरे को एक फायर प्लेस भी बनाना होगा, क्योंकि जंगल में मुझे पूरी रात यहाँ बितानी है। तो एक अच्छा फायर प्लेस भी होना चाहिए मेरे कैंप साइट के पास ही। मैं फायर प्लेस ही जो बना रहा हूँ, मैं उसी को कुकिंग प्लेस भी बना लूँगा बाद में, जब मुझे अभी भूख लगेगी। तो सबसे पहले तो मैं कुकिंग प्लेस बनाऊँ। मैंने थोड़ी सी इधर सफाई भी कर ली है अभी के लिए। बहुत ज़्यादा सफाई तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि जंगल ही है, जितना भी करिए। अभी सबसे पहले मुझे क्या करना है, कुछ सूखी लकड़ियाँ मैं ढूंढ लेता हूँ, जिससे मैं अपनी चूल्हे में आग लगा सकता हूँ, अपने फायर प्लेस पर आग लगा सकता हूँ। तो ये कुछ सूखी लकड़ियाँ इधर ही मुझे पड़ी हुई मिल गई हैं। ठीक है, तो मैं
आग जलाने की कोशिश करता हूँ और देखता हूँ अगर ये आग पकड़ लेती है तो थोड़ी बहुत मेरी आग लगनी शुरू हो गई है। अब लगभग रेडी है तो मैं क्या करता हूँ, अपनी वाटर बॉटल लेके आता हूँ और इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करता हूँ। तो ठंड भी काफ़ी लगने लगी है, मैं तो इसी में हाथ भी सेकने लगा। तो पानी मेरा ऑलमोस्ट उबल गया है तो मैं अपनी मैगी इसी में ढाल देता हूँ। पैन को पकड़ने में हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि हम इसको रुमाल से पकड़े या कोई एक पेपर या किसी चीज़ से। आग भी काफ़ी अच्छी लगी है और अब ठंड भी होने लगी, शाम हो गया है। मतलब अभी इतनी जल्दी, मतलब अभी शहर होता तो इतना शाम महसूस नहीं होता, पर यहाँ पे इतनी शाम महसूस हो रही है। और ये हमारी मैगी बन के रेडी, एकदम बिल्कुल बढ़िया मैगी बनी है। दोने में डाल लेते हैं। तो ये मैगी हमारी बन गई और आखिरकार मेरी भूख को एक सहारा मिला। भले मैगी का सहारा मिला पर सहारा तो मिला। हाँ, गर्मा गर्म मैगी। सबसे बड़ी बात यह है कि इस ठंडे में गर्मा गर्म मैगी खाने का जो मज़ा है वो कहीं और नहीं है। और ठंड में पूरी बॉडी मेरी ठंड हो गई, पर इस आग में और इस गर्म मैगी को खाने में काफ़ी मज़ा आ रहा है। अब तो मतलब शाम हो गई और ड्यू ड्रॉप भी गिरने लगी है। मेरी टोपी भी हल्की हल्की गीली सी महसूस हो रही है मुझे, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं शेल्टर में चला जाता हूँ और अपना भाला भी अपने साथ ले लेता हूँ और अपनी नाइफ भी ले लेता हूँ। तो स्लीपिंग के लिए, रात को सोने के लिए मेरा पहला जो ऑब्जेक्टिव वो ये है, एक मैट को अच्छी से बिछा देना। मैट पूरा अच्छे से बिछ गया है और मैं अपना स्लीपिंग बैग भी खोल लेता हूँ। अभी शाम के 6 बज गए पर ऐसा लग रहा है जैसे एकदम रात हो गई हो। और मैं इसको यहाँ पे ऐसे लगा लेता हूँ। इसको मेरी आग पूरी लग गई है लगभग, और थोड़ा सा और इसको चला दूँ तो मैं अब रात को सोने के लिए मैं चलता हूँ, सोने की तैयारी करता हूँ। काफ़ी ठंड हो गई है धीरे धीरे। मॉर्निंग हो गई है और कल रात 12 बजे मेरे साथ एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था, लगभग 11-12 बजे, कि मैं तो डर गया था। तो अभी मेरा मेन ऑब्जेक्टिव जिसके लिए मैं यहाँ आया था, बर्ड फोटोग्राफी। सुबह सुबह पूरा कोहरा हो रहा है अभी तो, पूरा जंगल के अंदर तो कोहरा समझ में नहीं आ रहा, पर आप उधर देख सकते हैं पूरा कोहरा हो रहा है एकदम जंगल के बाहरी तरफ। और अभी आग का धुआं भी निकल रहा है, पता नहीं आग मेरी कब बुझ गई होगी। तो सबसे पहले तो मैं ये कहता हूँ कि इस आग को पूरी तरीके से मैं बुझा देता हूँ। तो इधर से मैं अपना शेल्टर भी खोल लेता हूँ। तो कल रात को जो है देखा था, तो मैं यहाँ देख सकता हूँ कुछ हूफ मार्क्स है कुछ डियर के, यहाँ पे ड्रॉपिंग्स भी है कुछ। तो प्रोबेबली यहाँ मेरे इतने नज़दीक से अराउंड 10-50 मीटर्स के डिस्टेंस में शायद यहाँ से कोई एक हर्ड गुजरी होगी डियर की। तो चलिए मैं जल्दी से पैक करता हूँ और अपने साथ निकलता हूँ बस। तो मैं जंगल से निकल के, अपनी रात तो मेरी हो गई है, मैं सुबह से चल रहा हूँ।
तो अब मेरे को एक अच्छी स्पॉट मुझे दिख गई है जहाँ पे मुझे यहाँ पे, क्योंकि मैं यहाँ से 2 दफ़ा गुजरा भी हूँ इस तरफ रोड से, और मुझे यहाँ पे काफ़ी अच्छी बर्ड साइटिंग भी हुई थी। तो मैं सोच रहा हूँ कि यहीं पे मैं अपना एक बर्ड हाइट बनाता हूँ, और सामने जो ट्रैक है उसी में मैं अपना फोटोग्राफी करता हूँ, बर्ड फोटोग्राफी। तो लेट्स बिगिन विद सेटिंग अप अ सिंपल बर्ड हाइट। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि इस पेड़ से इस छोटे पत्ते पे मैं एक रोप बांध देता हूँ और उसमें कुछ पत्ते हैंग कर देता हूँ। उसके लिए सबसे पहले तो मेरे को अपना एक टेम्प्रेरी यहाँ पे सेटअप बनाना होगा विदाउट डिस्टर्बिंग द नेचर एंड द बर्ड्स। तो पहले तो मैं अपना एक मैट यहाँ पे बिछा लेता हूँ, और मुझे ये भी देखना होगा कि यहाँ ज़्यादा कुछ कीड़े वगैरह तो नहीं है, क्योंकि मुझे यहाँ पे काफ़ी लंबे समय तक बैठना पड़ सकता है। और चलते चलते अब गर्मी भी लगने लगी, पर मौसम अभी भी ठंडा है, तो मैं ये रिस्क नहीं ले सकता कि मैं जैकेट उतार दूँ गर्मी के चक्कर में, क्योंकि यहाँ तुरंत मुझे ठंड लग सकती है। तो मैं इसको थोड़ा सा अपने लेवल पे बांधूंगा, ताकि मैं अगर जब बैठूं तो मैं बहुत ज़्यादा ऊपर या नीचे ना हो जाऊं। कुछ बड़े लीव्स मैं लूँगा, क्योंकि ये एक यहाँ पे आपका साल भी है और टीक के भी पेड़ है। तो मैं इन्हीं के बड़े पत्तों की मदद से मैं अपना एक टेम्पररी एक मैं वो बनाने की कोशिश करता हूँ। कैंप सेट करता हूँ, ये मेरा, इसको मुझे डिस्टर्ब नहीं करना है। और मैं अपना कैमरा भी अपने साथ लाया हूँ, और ये मेरे पास कैमरा भी है मेरा, जिसकी मदद से मैं कुछ अच्छी फ़ोटोग्राफ ले सकूं, कुछ जूम करके। और ये मेरा, मैं अपनी जर्नल भी लाया हूँ, जिसमें मैं अपने बर्ड्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ मूवमेंट्स और कुछ सिंपल उनके कैरेक्टर, उनके नाम वगैरह मैं इसमें नोट कर लेता हूँ। तो ये मैं साइड में रख लेता हूँ। अपने सामने भी कुछ पत्ते रख लेता हूँ, ताकि एक लो प्रोफाइल बन जाए मेरे लिए। और काफ़ी मुश्किल टास्क होता है ये सब। बर्ड फोटोग्राफी में आपको बहुत चीज़ें ध्यान रखनी, जैसे आपकी ब्रीथ कंट्रोल आपको करना आना चाहिए, आपका पेशेंस होना चाहिए, और कुछ अदर एस्पेक्ट्स है, जैसे कि आप कितने अलर्ट हैं, आपको बर्ड्स की आवाज़ आनी चाहिए सब। तो मैं ऐसे एक ब्रीफ वो बना लेता हूँ, एक कॉम्पैक्ट अपना साइज। ये मैं ऐसे करके इसको रिकॉर्ड कर लेता हूँ। ये इनकी वीडियो मुझे बनानी होगी फ्लाइट पैटर्न के लिए। तो मैं क्या करता हूँ, कुछ वुडपेकर को मैं ट्रैक करने की कोशिश करता हूँ कि वुडपेकर कहाँ पर है। तो चलिए मैं अपना बैग पैक करता हूँ, और बैग पैक करने के लिए सबसे पहले तो मैं अपना रजिस्टर अंदर रखता हूँ, जिसमें मैं अपनी पूरी डिटेल्स में लिखता हूँ। अपना कैमरा भी मैं पैक कर लेता हूँ इसी में। और तो ये मेरा कैमरा भी रेडी है। मैं रोप्स को भी अपने साथ ही रख कैरी कर लेता हूँ। तो जंगल में एज अ नेचुरलिस्ट मेरा एक प्रण है कि मुझे कभी भी यहाँ पे कोई गंदगी नहीं फैलानी है, कोई लेटरिंग नहीं करना है, कोई ट्रेसेस नहीं छोड़ना है, क्योंकि एक यही है एक असली नेचुरलिस्ट की पहचान। तो सबसे पहले तो मैं अपना बैग कैरी कर लूँ, और अपने मैट को रोल करके इसको झाड़ भी लेता हूँ। अभी तो मेरे को पूरा लगभग 8-10 किलोमीटर चल के मेरे को भी पूरा शारदा नदी तक जाना है, तो वो एक काफ़ी लंबा टास्क होने वाला है मेरे लिए। तो अभी मेरे को सबसे बड़ी चीज़ है कि अभी वहाँ पहुँच के अपना राफ्ट बनाना, और मुझे जल्द से जल्द नदी क्रॉस करनी है, क्योंकि शाम होते होते पूरे नदी में मूवमेंट शुरू हो जाएगी जानवरों की, वाइल्ड लाइफ की। और तो अभी तो मेरा जो मेन ऑब्जेक्टिव था, जिसके लिए मैं इतना दूर लखनऊ से दुधवा की तरफ आया, इस पूरे तराई क्षेत्र में अपनी पूरी रात गुजारी,
तो मेरा जो मेन ऑब्जेक्टिव था डॉक्यूमेंटेशन करना, बर्ड्स की साइंटिफिक स्टडी करना और अपने मोबाइल से अपने कैमरा से उनकी फ़ोटोग्राफी करना, तो वो मेरा काफ़ी सक्सेसफुल रहा। और मतलब एक लक की बात है कि मुझे को आज बहुत अच्छी सेटिंग हुई, शायद ऐसी सेटिंग मुझे कभी भी नहीं हुई। और वुड पेकर्स की सेटिंग तो मुझे मतलब लिटरली मुझे पूरी लाइफ में फर्स्ट टाइम मुझे 4 वुड पेकर, 3 वुड पेकर एक पेड़ में दिखे। तो सेटिंग तो काफ़ी अच्छी हुई और मेरा जो मेन ऑब्जेक्टिव था, जो मेरा मेन गोल था, मेरा एम, मेरा मिशन, वो पूरा सक्सेसफुल हुआ और मैंने उसको पा लिया। इतनी गर्मी लग रही है मेरे को, पूरा इतना लंबा मैंने चल लिया। दोपहर से कुछ ज़्यादा टाइम हुआ होगा शायद। और इधर मुझे पूरी नदी की कटान मुझे दिख रही है कि मैं फॉरेस्ट से बाहर आ गया हूँ, क्योंकि जहाँ फॉरेस्ट के बाहर आपको सफ़ेद आसमान दिखने लगे, समझ लीजिए उधर ही आपका फॉरेस्ट का एंड है। तो सक्सेसफुली हमने पूरे जंगल को क्रॉस कर लिया। काफ़ी भयानक जंगल था पर अच्छा भी जंगल था। तो अब मैं कोशिश करता हूँ, मैं नदी की तरफ बढ़ता हूँ और अपना राफ्ट बनाने के लिए मुझे कुछ बम्बू की ज़रूरत भी होगी, कुछ बांस की। तो यहाँ तो मुझे कहीं बांस मिला नहीं जंगल में, नहीं तो मैं अपने साथ ले जाता। देखते अगर वहाँ मुझे मिल जाए उधर किसी तरफ या किसी के पास अगर मिल जाए, क्योंकि मैंने सुना है शारदा किनारे काफ़ी लोग खेती बाड़ी भी करते, तो हो सकता है शायद उनके पास मुझे बांस मिल जाए। तो चलते इसी तरफ चलते और शारदा नदी को क्रॉस करने के लिए पहले तो हम शारदा नदी पहुँचते हैं। तो मुझे यही एक रास्ता दिख रहा है, तो मैं इसी रास्ते के थ्रू गुजरता हूँ। और तो हम लोग फाइनली पूरा जंगल में हमने पूरा इवनिंग तक हमने सरवाइव किया और अब हम शारदा रिवर के पास आ गए। तो ये आप मेरे पीछे देख रहे हैं पूरा शारदा रिवर है और मैं बहुत थक चुका हूँ। पूरा मैं कम से कम अराउंड 10 किलोमीटर्स में वॉक करके आया हूँ इधर नदी के किनारे। अब क्योंकि उधर मेरे को बैंक पे उधर क्रॉस करके जाना है, तो अब मुझे पूरा जो मेन शारदा रिवर जो है यहाँ की, जो मतलब पूरे दुधवा टाइगर रिजर्व की जो सबसे इम्पॉर्टेंट रिवर है, मुझे उसको क्रॉस करना है। वो सबसे बड़ी बात है। दरअसल मेरे पास मैं अपनी बाइनोकुलर्स भी लेके आया हूँ। तो एक्चुअली मुझे यहाँ से रिवर क्रॉस करके वहाँ तक जाना है, पूरा दूसरे बैंक तक। और इधर जैसे जैसे शाम होती जा रही है, इधर वाइल्ड लाइफ मूवमेंट बहुत हो रहा है और इस वजह से मेरे को किसी तरह बस ये नदी क्रॉस करके वहाँ तक पहुँच रहा हूँ। मेरा एक अंदाज़ा है कि शायद मैं अगर मैं कोई एक तरीके की राफ्ट टाइप कुछ मैं बना लूँ, अगर कुछ पुरानी लकड़ी से या कोई बैम्बू से, तो मैं इस नदी को क्रॉस कर सकता हूँ। मुझे इट विल टेक मतलब हार्डली अराउंड 10 to 15 मिनट्स। तो लेट्स सी कि पहले मैं कहीं से कुछ बांस ढूंढने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि यहाँ दूर दूर तक मुझे कुछ दिख नहीं रहा है। तो पहले हम कुछ बांस की लकड़ियाँ लेके आते हैं, बांस या कोई लकड़ियाँ कुछ। तो आइए हम लेके आते हैं पहले। चलो यहाँ पे मेरे को एक फार्मर यहाँ पे मुझे दिख गए। ये पूरा गेहूँ का खेत है, तो उनसे बात करते हैं अगर वो मुझे कुछ बम्बू की लकड़ियाँ दे सकते हैं। भैया। हाँ भैया। ये बताइए, जो नदी है अभी इसमें कोई बाढ़ वगैरह का खतरा तो है नहीं? अभी तो नहीं है सर। क्या गहरा भी है? बहुत ही है। गहरा है। अच्छा अच्छा। तो इसमें क्या मगरमच्छ वगैरह भी है कुछ या बिल्कुल कुछ नहीं है? मगरमच्छ कहीं कहीं जहाँ गहरा होता है वहाँ पे रुक जाते हैं। तो इधर है इस तरफ? हाँ इधर गहरा होगा। अरे तो अब हमें मगरमच्छ भी एक हमारे लिए एक चैलेंज बन गया है और नदी को क्रॉस करना सच में बहुत मुश्किल होगा हमारे लिए। तो अच्छा भैया, हमें आपके पास बम्बू लकड़ियाँ होंगी? हाँ भैया, लाया था घर से मैं अपने। हाँ हाँ, ये यहाँ पे मचान वगैरह बनाने के लिए। तो आप हमें दिलवा दीजिए। अभी है आपके पास? हाँ लाना पड़ेगा। कितना टाइम लगेगा? यही 5-6 मिनट तक। अच्छा, तो चलते हैं हम फिर, लेके आते हैं। मैं चलूँ आपके साथ? हाँ चलो। आपका घर किधर, आसपास ही है? हाँ पड़ोस में ही है। अच्छा अच्छा, तो चलिए फिर लेके आते हैं हम, है ना। अब हम इसको ऐसे करते हैं, हाँ। है ना, और इसको फिर हम इसमें डालें। ये किधर पूरा जाएगा ये भी? हाँ, ऐसे। अच्छा ठीक है, ये भी पूरा लपेट लिया गया। हाँ। फिर और एक लगाऊं? एक इसमें और वो किए। अच्छा, इसमें एक और बनेगा। तो जितना ज़्यादा हम बढ़ते रहेंगे आगे उतना ज़्यादा बनेगा ये? हाँ। अच्छा 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 अच्छा, खुलेगा अब नहीं मतलब बिल्कुल, है ना। अच्छा भैया, थोड़ा और जल्दी हम करते हैं ना,
क्योंकि सूरज एक बार डूब गया तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, मुझे अभी आगे भी बहुत चल के जाना होगा, है ना। तो हम इसको शुरू करते जल्दी जल्दी। लाइए इसको मैं बनाता हूँ इस तरफ से, क्योंकि ठीक है। तो सबसे पहले हम एक चेक कर लेते कि ये हमारा ये पानी में फ्लोट कर भी रहा है कि नहीं। मैं थोड़ा सा गीला तो हो जाऊंगा, पर कम से कम नदी तो क्रॉस कर ही लूँगा, है ना। तो मुझे ये थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ेगा नदी क्रॉस करने का। वेट तो मेरा झेल ले रहा है, ये पता नहीं झेल पाएगा कि नहीं। लेट्स सी क्या होता है। अब मेरे को एक बांस और चाहिए होगा अपने आप को आगे पुश करने के लिए। पूरा सूरज लगभग डूब चुका है और इस जंगल से मुझे किसी हालत में निकलना होगा यहाँ से। अब मेरे पास कोई और चारा नहीं है, तो मैं निकलता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि गीले तो होने और ये फ्लोट भी अच्छा कर रहा है। अब मुझे ये देखना पड़ेगा कि ये मेरा वेट झेल पाएगा कि नहीं। तो अभी शाम तो काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, मेरे पास 2 बम्बू भी है जिससे मैं अपने आप को पुश करके आगे तक जा सकता हूँ नदी क्रॉस करने के लिए। पर मुझे जितना यह पता है, मैं इतना अच्छे से जानता हूँ कि गीला तो मुझे होना ही है ना। तो मेरे पास एक थैला है प्लास्टिक का, तो मैं ये जैकेट वगैरह उसी में उतार के रख देता हूँ। तो अभी मैं एक और चीज़ कर लेता हूँ, मैंने जैकेट भी अपनी सारी उतार दी है, तो मैं अपने शूज़ भी उतार लेता हूँ और उनको भी अपने प्लास्टिक बैग में रख लेता हूँ। तो जैसे आप देख सकते हैं कि ये फ्लोट कर रहा है ना। तो बैम्बू का एक प्रिंसिपल है कि ये फ्लोट इसलिए करता है क्योंकि ये हॉलो होता है, इसलिए हम राफ्ट पिकिंग में हमेशा बैम्बूज का यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। बहुत ठंडा पानी है। तो हम नदी किनारे आ गए और अपनी राफ्ट भी हम ले आए। आखिरकार हम जंगल पूरा क्रॉस कर चुके। और तो इस नदी में नदी बहुत ख़तरनाक है अगर आप देखो तो। और मतलब नदी क्रॉस करने में राफ्ट से काफ़ी मुश्किल था, बट वी डिड इट, हमने सरवाइव किया। हालांकि जो राफ्ट था मेरा वो बहुत ज़्यादा अच्छे से नहीं बन पाया, थोड़ा सा रस्सी जो थी वो शायद मुझे कुछ शायद मैंने नॉट्स शायद गलत बांधे या क्या, बट एनीवे हम सरवाइव कर गए और हम पूरी नदी क्रॉस कर गए। और अब हम अपने एक टाउन है इधर, पलिया शहर है इस तरफ, तो अब हम पलिया शहर की तरफ अब हम चलते हैं और वहाँ जाके कुछ देखते हैं कि जंगल के बाद शहर कैसा लगता है। तो चलिए घर की तरफ वापसी अपनी करते हैं। पूरी नदी क्रॉस करके इतना ठंड लग रही है मुझे। पूरा जंगल तो पार कर लिया मैंने रात में और नदी भी पार हो गई है, तो अब मेरे को धीरे धीरे ठंड भी लगने लगी है और जल्दी से मेरे को कल सुबह कैंप भी जाना है। लेकिन उससे पहले मैं जंगल से बाहर आ गया और उधर मुझे थोड़ा कस्बा जैसा लग रहा है, लाइट वगैरह जल रही है। तो मेरा अनुमान है कि ये वही गांव है पलिया के पास। उस गांव का मुझे नाम भी याद नहीं आ रहा, मैं बहुत साल पहले आया था यहाँ। पर एक व्यक्ति हैं जिनको मैं जानता हूँ, एक अम्मा हैं, वो उनसे मैं मिला हूँ, कई दफ़ा मिला हूँ, पर आखिरी बार मैं शायद सन 2015 या 2016 में शायद मैं मिला था। मुझे कोई आइडिया भी नहीं कि वो मुझे पहचान पाएंगे कि नहीं। और दूर दूर तक कोई तो है नहीं, वैसे वहाँ कोई आग जला के बैठा है, बट उनका घर मुझे जितना थोड़ा बहुत याद है, तो उनके घर को मैं थोड़ा सा ट्रैक करता हूँ कि उनका घर कितना पड़ेगा गाँव में। तो ये लगभग मैं गांव में तो आ गया हूँ। मुझे लग रहा है ये गेट है, शायद इधर ही से मुझे एंट्री लेनी पड़ेगी। अम्मा कोई है? हाँ हाँ भैया। अम्मा अम्मा पहचाना हमको? हाँ भैया, एक बार हमने देखो रही, तुम्हें पहचान तो लो है। लखनऊ से हम आए थे, एक बार आपसे मिले थे हम। हाँ
पहचाना? हाँ हमने पहचानो है। पहचान लिया आपने? हाँ, पहचान अरे लिया। बहुत बढ़िया। हम मैं अम्मा पूरा जो जंगल है अपना किशनपुर, हाँ हाँ पूरा जंगल में रह के पूरी रात जंगल के अंदर हाँ। रह के पूरा शारदा नदी पार करके मैं आया हूँ। तो अभी मेरे को ना बहुत ठंड लग रही है और कुछ भूख वूख भी लग रही है और मेरे पास खाना वगैरह भी नहीं है। हाँ। तो ये बताओ अम्मा, आपके यहाँ रात को मैं रुक सकता हूँ क्या? हाँ रुकी जाओ, तो रुक जाइयो। रुक जा सकता हूँ? हाँ तो बस रात का कुछ आप बता दो कि मैं कहाँ रुक जाऊँ, हाँ, कहाँ रुक रात के सकता हूँ? यहीं रुक जाओ। और कहाँ रुकी हो? यहीं रुको। यहीं रुक जाऊँ? हाँ तुम्हारी व्यवस्था करी है, रुको नहीं है। चलिए अम्मा, तो मैं यहाँ बैठ जाऊँ? हाँ बैठ जाओ। धन्यवाद अम्मा। हाँ आप बस चाय ले आओ। चलिए, थैंक यू। हाँ बैठो, चले धन्यवाद हम अम्मा। चाय बनवाइला मैं। हाँ हाँ हाँ। तो मैंने सोचा अम्मा मुझे ना ही पहचानेगी, पर सबसे अच्छी बात है कि अम्मा मुझे पहचान गई और एक रहने की जगह भी दे दिया। तो मैं यहाँ पे अपना रात को यहीं रुकूंगा और कल सुबह कैंप के लिए मैं निकल जाऊंगा। और जब तक अम्मा चाय लानी है उसके बाद फिर मैं सो भी जाऊंगा, क्योंकि अब काफ़ी थकान भी लग रही है और नींद भी आ रही है। इसी के साथ मेरा जो मेन ऑब्जेक्टिव था कि पूरा किशनपुर में रात को ठहरना, वहाँ पे जंगल में सरवाइव करना, फिर मॉर्निंग में जो मेरा मेन ऑब्जेक्टिव था कि पूरी बर्ड फोटोग्राफी करना है, वो सबसे अच्छी बात ये है कि एज ए नेचुरलिस्ट मेरे सारे जो ऑब्जेक्टिव्स थे वो मैंने अचीव कर लिए। तो इसी के साथ मेरा ऑब्जेक्टिव पूरा होता है और मैं सक्सेसफुल होता हूँ। थैंक यू सो मच। अनिरुद्ध हमारे साथ लाइव हैं, वो इस समय ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं। और अनिरुद्ध, क्या आप हमारी आवाज सुन सकते हैं? जी मैम, आवाज़ आपकी मैं सुन सकता हूँ। तो कुछ सवाल हैं जो हम आपसे जानना चाहेंगे, और हमारे पार्टिसिपेंट्स भी अगर कुछ सवाल अनिरुद्ध से जानना चाहते हैं, कुछ आपके सवाल हैं जो आपके क्वेश्चंस हैं जो आप अनिरुद्ध से पूछना चाहते हैं, तो वो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है। आपकी ट्रेन की आवाजें भी हमें सुनाई दे रही हैं अनिरुद्ध आसपास से। Anirudh, I'm Vikrant here, and there is a message from Vedant. Yeah. And Vedant says, hats off to you, Anirudh sir. It is not easy to stay in the jungle and for the entire night. So compliments from Vedant to you. Thank you so much, Vedant. So विक्रांत सर, मैं अनिरुद्ध से कुछ सवाल पूछूं और पार्टिसिपेंट्स के अगर कुछ सवाल हैं तो आप प्लीज बताइएगा। Sure. अनिरुद्ध, ये बताइए कि भाई व्हाट वाज योर ऑब्जेक्टिव फॉर गोइंग टू दुधवा एंड स्पेंडिंग अ नाइट ऑल अलोन इन द डेंस फॉरेस्ट? वाज इट सम काइंड ऑफ मैन वर्सेस वाइल्ड एडवेंचर? अनिरुद्ध, आप हमारे साथ हैं? I think there are network issues on the train. So very true. I'll try to explain. See, Anirudh, participants, अनिरुद्ध वहां पे इसलिए नहीं गए थे कि उनको कोई मैन वर्सेस वाइल्ड का एडवेंचर करना था, वो बर्ड की फोटोग्राफी के लिए गए थे। Yes, Exactly, ma'am. I went at Dudhwa Tiger Reserve just because of. Anirudh, yes, I'm audible to you, ma'am. Anirudh, there is a network issue, so I will try to answer on your behalf. Okay, permit me to answer on your behalf. देखिए अनिरुद्ध वहां पे फोटोग्राफी के लिए गए थे, especially to photograph the birds. Yes. I have a question. Why did he have to go for into the forest on foot? Why can't he go for on a jeep safari, Vikrant sir? I'll explain on behalf of Anirudh. Anirudh, there is a network issue. Anirudh is there. I think he can explain on his own. Yes, Anirudh. Yes, Anirudh. Yeah. Am I audible to you, ma'am? Yes, you are audible. हाँ, एक्चुअली सर मैं बाय फुट मैं इसलिए गया था ऑन फुट जंगल में, क्योंकि अगर आप आप
Anirudh, I'll Anirudh, there is a problem with your, yeah, there is, Anirudh, can you hear me? Anirudh, Anirudh, there is a network issue. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So I'll answer on your behalf. Please allow me, with your permission, kind permission. Yeah, yeah. Anirudh So, is- so I'm really sorry, sir. No problem, no problem. See, participants, Anirudh has gone for another adventure today, so he's traveling, so he's not able to answer our questions, but Vikrant sir will answer on his behalf. Yes, Vikrant sir. अनिरुद्ध इसलिए गए थे, जीप सफारी पे नहीं गए क्योंकि उसका सिंपल रीजन ये था कि जो जीप जब चलती है तो वाइल्ड लाइफ आप कहीं भी देख सकते हो, वाइल्ड लाइफ कहीं भी हो सकती है, ऐसा नहीं है कि वो फॉरेस्ट ट्रैक्स पे होगी। पर जब आप फॉरेस्ट के डीप फॉरेस्ट के अंदर जाते हैं तो आप अलग अलग एंगल से बर्ड्स को फोटोग्राफ कर सकते हैं, कहीं भी आप बैठ सकते हैं और आप छुप सकते हैं और बर्ड की बड़े अच्छे से फोटोग्राफ कर सकते हैं। जबकि जीप में क्या होता है कि जीप में मूवमेंट रहता है, तो आपका कैमरा, आप स्टेशनरी नहीं होते हैं, कैमरे का मूवमेंट रहता है, आपका हाथ हिलते रहते हैं, तो ठीक से फोटोग्राफी नहीं हो पाती है। तो और तो इसीलिए अनिरुद्ध ने डिसाइड किया कि मैं अकेले जाऊंगा और वहां पे अकेले रह के फॉरेस्ट के अंदर अपने हिसाब से अच्छी तरीके से फोटोग्राफी करूंगा। Jaya says, appreciate Anirudh. Have you seen any streams for getting fresh water in the jungle? Yes, Deepti, you are at Dudhwa. Should we take permission from the forest department to stay in that area? This is a question from Megha and from Jaya. Appreciate Anirudh. Have you seen any streams for getting fresh water? Deepti, would you like to reply? See, there are water bodies in the forest where we can take fresh water. So, but we always carry our water bottle. And by simple filtering mechanism, we can refill our water bottles. And Megha says, should we take permission from the forest department to stay in that area? Yes, because it's a tiger reserve, so we are not allowed to go into core forest. We have to take special permissions to go into the forest. Yeah. Again, a response from Krishna. She says, good job, Anirudh. Jaya says, okay, ma'am, thank you. Vikrant sir, so what do you think about Anirudh's adventure? You have watched this program. What is your opinion? My opinion is that it was really a very dangerous mission, a very risky mission. Okay. Why do you say so? Because, yeah, I tell you why. Because he was in the tiger's territory. Na? He was right in the tiger's territory. So it was a risky mission. But as they say, डर के आगे जीत है. And the best part is that Anirudh is back with us. He is out for another adventure already. But he managed to survive in the forest all alone, on by himself. And he reached back safely. He is safe and sound. So that is the success of the mission, and that is his victory. डर के आगे जीत हासिल करी Anirudh. Yes. So that is very important, Vikrant sir. And see, our objective at the camp is, to give experience of the life of the naturalist to our campers. Okay. It's because our camp is totally tailor-made for naturalists. Right. So, Vikrant sir, shall we take a look at our camp first? Why don't we show our photographs to the participants? The photographs which Anirudh has taken. Yeah. And we'll ask they must be really excited about it. Yeah. So we must show them the photographs, I think. Just a minute. Yeah. So here we have the photographs of the birds which Anirudh has taken during this mission. And participants, you have to identify these birds. So if you can identify these birds, please write their names in the chat box. And there is an answer from Vedant already. Vedant says it's the woodpecker. Yes.
Of course, it's a woodpecker, but anybody can specify which woodpecker is this? क्या मैं आपके साथ सफारी कर सकता हूँ? जी बिल्कुल कर सकते हैं. So it's a woodpecker. If any of you can identify which, see, Anirudh was mentioning that seeing so many woodpeckers together was a different experience altogether. बहुत ही कम ऐसा होता है कि आपको Soumya says black rumped woodpecker. Black rumped woodpecker. So shall we move ahead? Here we have another photograph. Someone says मेरा एक friend पलिया में रहता है. Flameback. Megha says flameback woodpecker. Very nice, Megha. Can you identify this bird? See, they look like leaves. Such a beautiful photograph Anirudh has taken. You really need a lot of patience. They look like leaves on the barren tree, on the leafless tree. Parrots, Vedant, Jannat, Soumya. This is Megha says, is this the rose-ringed parakeet? Yes, Megha, this is the rose-ringed parakeet. Very good. And let's see which other birds Anirudh have identified. This is simple. See in your garden, near your houses, in your schools, in your offices, near your offices if there is some greenery around. Can you identify anyone? Khushbu says Koel, Brijesh Gupta says Goraiya, Soumya says Robin, Megha says Robin species. Please specify, Soumya. Very near to it, Soumya and Megha. It's Akanksha says Maina. It is not the Maina. Realme 8 says Black Drongo. Kirti says, and this is from Ankan. He says Oriental Magpie Robin. Very nice. Oriental Magpie Robin. And see how beautiful it is. It has been focused. The background is blurred and the complete focus is on the bird. So lovely photograph by Anirudh. And can you identify this bird? Kirti says it comes to my garden. Okay, there is another bird on the screen, and Megha says Sarah's crane. So Megha deserves a prize, I think. Yeah, we'll send. Please write down her name, Vikrant sir. I have taken a note. I have taken a note. Camp gift voucher to her. There are two other participants. UP national bird. It is the state bird of UP. Yeah, okay. And it is the tallest flying bird as well, the Sarus crane. Shrey also says it's the Sarus crane. Okay. We have another bird which Anirudh has a photograph near the Sharda river on the silk cotton tree. Anybody? And Ashwin says vulture, Khushbu says vulture, Vedant says vulture. Excellent, but if you can identify the species as well. It is from the vulture family. Gur Sahib vulture, Kirti vulture. Soumya says bald vulture. Bald vulture. Griffin. Megha says griffin vulture. Ah, very good, Megha. This is the Himalayan griffin vulture. And you can see big flocks of Himalayan griffin during winters in Dudhwa Tiger Reserve. If you are lucky, highly endangered, their number is decreasing. Vedant has also identified it as the griffin vulture. Okay. Yeah. So, Vikrant sir, we are already at the camp. Can we take our participants inside and show us our camp? Show them our camp. Yeah, sure. Please, let's move inside. See, participants, campers, आप देख सकते हैं. ये हमारा कैंप है, बिल्कुल जंगल के बिल्कुल पास में है. It's very close to the forest and it is fully fenced. It is a very safe place, right?
So nothing to be afraid of. And it is the blessed place to explore Dudhwa Tiger Reserve because we are so close to the forest. Just a 2-minute drive and you reach the entry gate of Kishanpur Tiger Reserve. And it is very near to both Lucknow and very near to Shahjahanpur. So it is very easily accessible. Right. And it is a completely safe and secure place because it is fully fenced. Okay, now participants, please take a look at what kind of accommodation we provide to our participants. यहाँ पे आप देख सकते हैं. This is what we arrange for. We have naturalist style tents. भाई you are going into the forest. You have to experience the forest like a naturalist. So you can see this is a very luxurious jungle tent. It is made of canvas. And if you want to experience the elements of nature, in nature, you must live like a naturalist. So if you want to experience the dewdrop, the sunshine, the sunlight, this is the place where you ought to be. And let's take a look from the inside. Let's see how comfortable it is. Yes, there we are. It's very comfortable. We have upcycled wood furniture for you. We have a double bed, we have sofa sets, we have a luggage rack, we have a study table. So it's fully furnished and it is cozy and very comfortable. Okay. And you can see we have beautiful attached toilets with hot and cold running water. And not only are they very neat and clean and hygienic, they are also very aesthetically made. They are very beautiful from inside and they are completely eco-friendly, and all the waste is very well disposed of. And we have taken inspiration from Shri Bandeshwari Pathak, who is the brand ambassador of India's sanitation movement. Yeah. Then we have a beautiful kitchen. We have used Tharu. This is a mud structure. This is a mud structure, and we have used excellent construction techniques. We have used the Tharu traditional Tharu community construction techniques to build this structure. So it is very energy saving. It is not only eco-friendly, it is very energy saving. It saves us a lot of energy, and you can see for yourselves that we provide. There are no refrigerators inside. So we provide fresh, healthy, nutritious food. It is not frozen food. It is not packed food. It is not pre-cooked food. It is fresh food that we provide to our campus, which is delicious, right? And all the participants who come to our camp, they find our food as the best. They rate that this is the best food that we have had. Fresh, healthy, vegetarian food, freshly sourced, right? And cooked with love. Okay. See, it's an eco-friendly and solar powered camp, right? And we generate green energy. We don't pollute. We are off the grid. We are not connected to the electricity grid. And we do not cause any pollution. We don't have gensets. We don't have generators that create pollution. And whatever energy we generate, the power we generate, we use it very judiciously, right? Because power is very scarce at the Dudhwa. And all the participants who come to our camp, we have a zero waste policy, right? We don't waste things. We segregate the waste into organic and inorganic. All the food, the rotten food and all, the used up food, the leftover is put into pits. The non-degradable waste is given over to the municipal authorities. So there is no pollution. We reduce, we recycle the things, and here you can see for yourself how the participants who have come to our camp, they recycle the waste, and we make beautiful nest boxes and we put them up right in the forest, right at our camp where birds can nest, right? We have a zero waste policy at our camp. And then what is more unique about our camp is that we have so many activities, right?
We have numerous activities, and campfire is the time. Every evening we light the campfire. The campfire tent is beautifully illumined, and all the participants, they gather there, they congregate there, and together we narrate the stories of tigers and the legends of Dudhwa, and it is such a mesmerizing experience. And then where else at Dudhwa can you experience a boat cruise, right? And the boat cruise not for recreation, not for entertainment. This is a boat cruise to track the wildlife, track the dolphins, track the gharials, track the crocodiles on this amazing river called Girua River. And believe me, once the boat moves upstream into the river, and you have cane forests on both sides on the river banks, it is like an experience of the Amazonian forest. So we have boat safaris to view the gharials and dolphins and crocodiles in the Amazonian-like forest. And then we also take you for walks in tigers' territory. And don't worry, the tigers don't appear, and thankfully they don't appear. I would say thankfully they don't appear, but it is amazing to walk inside the tiger's territory. You may not get to see the tiger, but you will definitely get to see so many birds perched on the trees. And for me, the most beautiful sight is the sight of the crested serpent eagle, the eyes, the piercing eyes of the crested serpent eagle focused on the prey, and like a sentinel, he guards the forest perched on a high tree. And then in the forest, you have the magnificent trees, the magnificent sal forest, you have the creepers, you have the termite hills, you have the insects and the spiders, and you can experience it all firsthand in the jungles of Dudhwa. All right, then one very interesting part of camping with us is that we take you across to Nepal. Now, Nepal is a country abroad, it's a foreign country, so to say. And here you cross the pillar, you cross the border post, and then your mobile phones start ringing. So there is the Nepal network informing you that you are in Nepal. But please don't pick up your phones because roaming charges, international roaming is applicable here. And then there is the river Mohana. You wade across the river Mohana and you are in Nepal, in district Kailali of Nepal. So this is so interesting. You photograph yourself on the border post and then move into Nepal. And then we have some very interesting activities about surviving in the wilderness amidst the dense sal forest. This is a mission similar to with some similarity to the mission performed by Anirudh into the forest, tracking the tiger. And as a part of this activity, there are many associated activities: making your shelter, making your food, building weapons of self-defense, making a trap. That's a very interesting, very thrilling, adventurous activity, and it tells you so much about surviving in the forest. All right, now then we have a very challenging activity, and this is at River Sharda in Mohana. And you can see this net. This is a fishing net which is used by the Tharu community. It is called the Thati. और इस थाटी को लेके जो लेडीज होती हैं वो नदी पे अपस्ट्रीम चलने लगती हैं, और जैसे जैसे वो अपस्ट्रीम चलती हैं तो उसमें फिशेस आके फंसती जाती हैं. तो हम इसको एक साइंटिफिक स्टडी के लिए भी यूज करते हैं. वी यूज इट फॉर साइंटिफिक स्टडी. वी कलेक्ट द एक्वाटिक फौना, वी कलेक्ट फिशेस, tadpoles, reptiles, we observe them, we photograph them, and then we release them into the wild, into their original habitat. Yes, and the most attractive part of the safari is of visiting the Dudhwa forest is the jeep safari. But what usually happens is, but once people are inside the forest, वो कहते हैं यार टाइगर देखना है, टाइगर देखना है, और उससे क्या होता है, they forget that
tiger is just one component of the forest. There is so much more inside the forest, and more than anything else, this is a place which is calm and quiet. It is silent. There is no pollution. It is oxygenated air. You fill your lungs with air and get charged yourself and experience the beauty of the forest. That is the real thrill. And whatever wildlife that you get to see is like the icing on the cake. It is not the cake itself, but the jungle safari is the real cake. Yes, Deepti. So that is what summarizes our activities at our camp. Vedant says, what all animals are there at, how can we reach the camp, sir? I have been to Nepal, very beautiful place, just love the nature. We'll get back to you, Khushbu, Megha, Jaya, we'll get back to you, but meanwhile, Deepti has something to tell us. See, participants, I hope today you could get that feel of thrill, the thrilling experience which Anirudh had during this Art of Jungle Survival program. Were you able to experience that thrill of what Anirudh had experienced during the mission? If yes, you must give us a thumbs up. Everybody, show your thumbs, open up your cameras. If you could feel that thrill. Yes, I could see some thumbs up are there. So participants have experienced that thrill, I think. And I would like to, invite you all to visit us at Dudhwa Tiger Reserve at our camp at National Environment Science Camp. There are two options which I give you. One is the soft option and one is the real option. So the soft option is that you subscribe to our YouTube channel, you follow us on our Facebook, on Instagram, and we keep organizing such programs from our camp, online programs. You can participate in that. And from your homes, you can experience that wilderness, how a naturalist lives in a forest. Now, another option is, the real option is that you'll have to leave the comfort of your homes, the air conditioning, the electronic gadgets, and actually come to the camp. Come to the camp and experience the wilderness as it is. We'll go together and explore, we'll track the wildlife, we'll walk into the forest, go for jungle safaris, listen to the stories at the campfire, talk to the Tharu tribals. And all this is possible when you actually come to the camp. And how to do that? Well, you can plan with your families and friends. And from Lucknow, it is just 200 kilometers. So you can drive down. There is a train also. So you can come use that. Or if you are coming from all over, anywhere from India, you can come to Lucknow and then by train or by flight, and then you can come by road to the camp. So it's easily accessible. You can plan it with your families. We'll send it to your details to your numbers, or you can also visit our website. That is dudhwanationalpark.org. You can visit our website and know more about it, or you can PM me also, personal message on WhatsApp, to know more about the camp. There's another option, the soft option, Vikrant sir. I forgot to tell them that we have developed some games on Indian mammals, like this jungle cards, and then we have the game on migration. You can play them as well and know about different aspects of wildlife in the forest and the life as a naturalist. These are available on our online store, that is Tharu Vannidhi online store, which is also on our website, that is dudhwanationalpark.org. So there you can access these games